her first thing was, I wish you were on the set. तू होता तो ये कभी नहीं होता. News बाहर आने के बाद जेनी ने एक इंटरव्यू में बोला कि आप प्रिया को पूछो कि वो इतने दिन से तारक में क्यों नहीं आई है. If I was close to Jenny and if she was abusive, I would have said yeah, she was abusive on the set. Yeah, that's what I'm saying. Team used to go out for events and all, and they never asked me. Biggest reason for me quitting the show was me as a person was changing. एक typical हमारा इंडियन माइंडसेट होता है कि पति कमा रहा है ना, तो तुझे क्या जरूरत है, तू क्यों लोड ले रही है. I definitely believe कि यहाँ पे जेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. Hello everyone. Today we have a very cute couple as a guest on our show over here. They fell in love on the set of Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah. Please welcome Priya Ahuja and Malav Rajda. Thank you. Yes. How did you guys fall in love with each other? When was the moment of realization? For me, it was love at first sight. Okay. I mean, actually, yeah, I saw her the first time when I fell in love with her. So I think it was on the set of Taarak. It was her comeback, I guess. She came back to the show. We were shooting GPL, and she came. She was wearing a nice short black dress, and I'm like, oh, she's someone very cute and very hot. Hot. And yeah, I did fall in love with her, but a very filmy thing happened that it was a night shoot, and I was going back home. I was driving back home at 5 in the morning, and रास का ये गाना बजा, तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं. And I could only think of her. And I'm like, is this love or is this just me being too filmy? But yeah, then eventually we became very good friends, and then the rest they say is history. So yeah. Who made the first move? No one. Nobody. No. Till date, no one. We are like, we became very good friends. Or, I think that's why Ardas happened after 8 years. Actually, so we became very good friends, and I think after a point मुझे ऐसा लगा मुझे ना इस सिर्फ यही झेल सकता है. I think he still loves me, and I still blush when he tells our love story and all. I think we are still in our lovey-dovey phase अभी तक. I don't know why, but so I think the secret, a lot of our friends tell us like, you are an ideal couple, we want to be like you. So how do we, what is the secret? I say we started off as being very, very good friends. We got married on the way, but till date we are best of friends. We are just best friends, and we can tell each other anything about anyone. So the thing that Malav and I have unknowingly always kept is we don't have filters between each other, like not even a single filter. Yeah. We can just There's communication. There's proper communication. whatever. So like how friends talk, that's how we still talk. So once I remember her father had come home, typical North Indian family, और वहाँ पे दामाद का बहुत होता है कि दामाद है, so they're like full of like awe of me and all. So like something she was having, I don't know what she was eating, कुछ खा रही थी. And she went in the kitchen, और मैंने I don't share my food. I'm Joey. I don't like sharing my food. So she went inside, और मैंने वो खा लिया, and then she came out like, कुत्ते तू खा गया? And her father like, गुड्डन क्या बोल रही है तू? मतलब Dad, it's okay, like that's how we are. Don't worry. हम ऐसे ही बात करते. He was like, उनको लगा पता नहीं अभी मेरा ये दामाद तलाक दे देगा मेरी बेटी को, घर भेज देगा मेरे साथ ही. So I'm like, ऐसा कुछ नहीं है. That's how we still are, like. We that's how like we are. We एक दूसरे कुत्ता कुत्ती बोल देते हैं. We mind our language a lot these days in front of us. Yeah, that was my next question. How do you all filter your language in front of others? I mean, I think that comes very like once you become parents now, वो automatically आपके system में आ जाता है. So on the set, were the other cast members, the crew, aware that you guys are in a relationship? Yeah, kind of. They all had, of course. Jenny तो played Cupid. Yeah. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि should I be thankful or should I be angry on her? तभी I was very happy that she played Cupid. But Jenny always used to joke around कि एक प्रिया है और एक मालव है, मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, like for the baby. She always used to say. और अब जब अरदास कुछ भी ऐसी हरकत करता है, like तूफानी, I call him Little Ranveer Singh because he's super energetic. मतलब he's all over the place like a butterfly. So I always tell Jenny कि तुझे देखना था ना combination, आ घर पे संभाल उसे. I think he just told my mother that he likes me because उसे ऐसा डर था कि कहीं मुझे directly कुछ बोलेगा तो हमारी friendship ना खराब हो जाए. Then he told my mother, and then my mother convinced me कि अच्छा लड़का है. The first time I met her mother, the first time ever in my life, I asked for a hand.
I mean, Yeah. and I That's still, okay. You don't need to tell the entire story. no, I still remember I had a pillow in between. मैं बोला मैं यहाँ pillow रख रहा हूँ in case आप कुछ मुझे उठा के फेंक के मारोगे तो this is for my protection, but I would like to marry your daughter. And She then was my like, mom convinced me कि अच्छा लड़का है. Then I also she didn't convince अच्छा लड़का, she knew तू कैसी है, तो हाँ भाई करो. या मेरी मॉम को लगा कि कोई तो लेके जा रहा है, इसको लेके जाओ. So you have very good memories associated with the show, but sadly the show is, a lot has been talked about the show right now, and because you have, Malav, especially you have been the director of the show for almost a decade, more than that, and you have been a crucial part of it. So how does it feel to read these things? I mean, It is definitely, it is not a very happy thing to go read about such things, it is very disheartening, but now it is what it is. I mean, but He's it just is- saying he's just saying it. He's very much disturbed. He doesn't like reading anything negative about the show. He doesn't like saying anything negative about the show. We have been discussing since couple of days because the whole thing, actually what happened was Jenny ki news bahar aayi. We got to know what exactly happened. She called Malav. She told Malav everything that happened, and her first thing was, I wish you were on the set. Tu hota to ye kabhi nahi hota. After that, what happened was ki Jenny was quiet. Then she got the notice and everything happened. And however, it was meant to happen. It just happened. न्यूज़ बाहर आने के बाद जेनी ने एक इंटरव्यू में बोला कि आप प्रिया को पूछो कि वो इतने दिन से तारक में क्यों नहीं आई है. देन शी सेड कि आप मालव को पूछो उसने तारक क्यों छोड़ा. So with all that thing, people started asking her, and of course we are close to Jenny, and most important thing was कि Malav was like, I need to stand by the truth. He said कि जो चीज़ it's सही not है. Only being close to Jenny. Like if I was close to Jenny and if she was abusive, I would have said she was abusive on the Yeah, set. that's what I'm saying. Now, when people talk about the sexual part, like whatever happened, we really don't know about it. We genuinely don't know. But yes, as a friend, as a co-artist, I've never seen her abusing on the set and all. Of course, it did a couple of times when we used to, the team used to go out for events and all, and they never asked me for the events. And I requested them a few times, I don't feel that my track is same how it used to be, especially before marriage. And after that, I feel after COVID, तो बिल्कुल ही कुछ था नहीं play करने के लिए. So I told Asit bhai a few times. I expected कि मैंने ज़िंदगी के 12 साल इस शो को दिए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं I can expect my producer to understand my point, which he didn't. I felt bad only where Malav decided to quit the show. He told Asit bhai he doesn't want to do it. I think 14th of November was the date when he verbally said, and 1st of December he gave he sent gave them it in writing. Yeah. Official notice. So official notice उसने दिया. उसके बाद 15 December was his last working day. Unfortunately, 14th November onwards मुझे कभी set पर नहीं बुलाया गया. So I felt like, was this relationship only between Malav and Asit bhai? Where was I? क्योंकि शो में मुझे मालव लेकर नहीं आया था, मालव ने मेरी कास्टिंग नहीं की थी. मैं शो में इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं मालव की बीवी थी या मैं मालव की गर्लफ्रेंड थी. मैं शो में मालव के पहले से थी. फिर मुझे इस तरीके से क्यों हटा दिया गया? There I felt genuinely hurt and bad, and it's very hurtful. Of course it's hanging situation, and also it's hurtful that this guy who never spoke on my behalf to Asit bhai till date. I never ever asked him in 14 years. चलो 12 साल शादी के, लास्ट 4 साल कोविड के, इन 4 सालों में 12 सालों में कभी मैंने उससे नहीं कहा कि मालव प्लीज टॉक टू आसित भाई फॉर मी. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हेल्ड बैक माई इमोशंस. आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग as such or discussed anything with him that how frustrating it is that I'm part of the show. Still I'm coming so less, only because I thought that he will feel bad about it. मैंने आसित भाई से कभी बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोला. कभी एक्टर्स जाते हैं, बहस कर लेते हैं, लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं. मैंने वो भी कभी नहीं किया ये सोच के कि उस बात को भी अलग तरीके से ना लिया जाए. There are a lot of actors that I know जो पहले स्क्रिप्ट में नहीं होते हैं. अगर कुछ होता है, इवेंट होता है या कुछ सेलिब्रेशन होता है, they are not a part of the script. But then they will call up Asit bhai, why I'm not there, I'm not shooting, please, and Asit bhai would add them in the script. But she has never done that. After the event, I have told Asit bhai a few times कि sir, I felt that I should have been there.
I could have messaged him before the event also, but I don't remember. शायद मैंने कभी उन्हें मैसेज नहीं किया है इवेंट के पहले, जितना मुझे याद है. मेरे लिए it was a very catch-22 situation कि कहीं बार as a director I felt कि इसमें रीटा can be there, but I would never say it because I don't want them to think कि देख डायरेक्टर है अपनी बीवी को अंदर, मतलब मुझे बोलना ही नहीं है. मैंने जितना भी काम बाहर किया है, मैंने बहुत काम किया है बाहर भी, लेकिन जो पहचान मुझे रीटा रिपोर्टर के कैरेक्टर ने दी है वो किसी चीज़ ने नहीं दी है ना. आई एम नॉट इवन अशेम्ड ऑफ सेइंग दैट कि मेरा सारा काम मिलाकर एक तरफ और रीटा रिपोर्टर एक तरफ है, तो भी रीटा ही भारी पड़ेगा, लाइक दैट मेरे लिए इट वाज अ हैंगिंग सिचुएशन. बट फॉर अस टॉकिंग अबाउट दिस होल थिंग वाज टू सपोर्ट जेनी, टू से थिंग्स फॉर हर, बिकॉज वी न्यू शी इज नॉट रॉन्ग एट पर्टिकुलर प्लेसेस जिसके बारे में हमें पता है. सो दैट्स इट. Malav, what prompted you to move on from this show? Like after more than 10 years is a huge commitment. क्या हो रहा था कि when I used to get up in the morning, I was not happy about going on this set. I was not feeling excited enough. I was like, अरे यार फिर जाना है, फिर वही रूटीन करना है, फिर तो there was definitely a saturation point, and I was not enjoying going to the place. It's very hard to explain in words कि why I was not happy. There could be too many reasons for me not being happy, कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ होती है, जैसे अगर मेरे साथ something must have happened 6 months back, I didn't reacted that, मैंने react नहीं किया, पर कहीं ना कहीं it's there in my mind. तो ऐसे जब कुछ incidents होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, then कुछ pile up होते हैं. So then there comes a time where you're like, okay, now this is it. अब इसके ज़्यादा I cannot take things, और इसके ज़्यादा मैं नहीं खींच सकता हूँ. And that is not being honest with the show also. अगर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, if I'm not enjoying my work, तो मैं scenes अच्छे direct नहीं कर पाऊँगा. So I thought, why not just move on? And the biggest reason for me quitting the show was me as a person was changing. I and Priya, who never used to fight or who never used to argue, ये मुझे घर आके कुछ बोलती थी. I used to become little irritated. I used to be frustrated. मैं चिड़चिड़ा हो गया था. So मेरा personal nature change हो रहा था. So मुझे यही लगा कि why am I changing? I'll just change my job ना. तो मेरे लिए बहुत सारे emotions थे. तो I think when I quit the show, कहीं ना कहीं मेरे emotions टूट चुके थे, और जब आपके emotions टूटते हैं ना, आपके लिए move on करना बहुत easy होता है. Okay. So you quitting the show, was this news taken positively, or was there a reaction to it, or was there a commotion over there? See, I don't know. I mean, they definitely wanted me to stay back. And there was no fight or nothing like that. They tried to convince me once or twice, stay back, do this, do that, stay back. Things are not great outside, it's not easy to get work outside. I'm like, okay, I'll not work for a year. It is okay. I'm willing to be at home, I'm willing to look at myself and see how to take things ahead. But this show I cannot do any longer. ये show अब मैं नहीं करना चाहता हूँ. मेरे को नहीं मजा आ रहा है. After I quit, I mean, what I have got to know, that things have become a little haywire. Priya, I had read a statement that said when you'd asked for work, you were told that your husband is working. Why do you want to work? So, as an independent woman who is great in all the aspects of life, what was your instant reaction to that? Of course, I didn't like it. But knowing Asit भाई, वो कभी-कभी कुछ बातें ना बहुत मजाक में कह जाते हैं, जो कभी-कभी सामने वाले के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हर्टफुल हो सकती है. दैट वाज लाइक एक टिपिकल हमारा इंडियन माइंडसेट होता है कि पति कमा रहा है ना, तो तुझे क्या ज़रूरत है, तू क्यों लोड ले रही है. बट मेरे लिए मैं बॉम्बे मालव से शादी करने नहीं आई थी. मैं बॉम्बे काम करने आई थी, और मैं काम ही कर रही थी तारक मेहता में. मालव हैपेंड इन माई लाइफ ड्यूरिंग तारक मेहता, ड्यूरिंग माई एक्टिंग करियर. सो ही इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ. ही इज़ नॉट माई एंटायर लाइफ. सॉरी. मैं आज भी कास्टिंग वालों को बोलती हूँ, आई एम लुकिंग फॉर वर्क. आई लव वर्किंग. आई थिंक द बिगेस्ट लॉस प्रिया फेस्ड वाज कि पूरे इंडस्ट्री में ना ऐसा एक है कि अगर आप तारक मेहता कर रहे हो तो उसका एक्टर बाहर कुछ करता ही नहीं है, जो एक्चुअली फैक्ट है. बाकी सबके लिए लोग एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में है और मैं इसके लिए शी वाज अलाउड, बट दैट शी न्यू एंड द प्रोडक्शन हाउस न्यू. लेकिन बाहर तो सबको यही था, अरे यार तारक कर रही है, उसको यार कोई छोड़ेगा ही नहीं यार, उसका डेट का पंगा. So that's why she never got that many calls also. Yeah. There was a phase in between in Taarak. I think there was another Rita Reporter, and then again you were brought back.
So what's the whole story behind that? That's ages back. I am there in Taarak from the day one. I was there in Taarak from the day one. Okay. So then this Ganpati thing was going on in September. Like June end, we started shooting for Taarak. And Ganpati thing was going on in September, October. That time, already before Taarak, I was doing 2 shows simultaneously. And Asit Bhai knew about it. But when they needed the dates and all, and I was juggling between 3 daily soaps. Okay. So there were actually days मैं घर नहीं जाती थी, सेट से सेट पे शिफ्ट होती थी. जब तारक में एक सीक्वेंस आया जहाँ पे आई वाज रिक्वायर्ड, नाइट सीन था और मेरा डे में कहीं और था. सो आई टोल्ड आसित भाई दैट आई विल नॉट बी एबल टू कम एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड आई विल कम एट दिस टाइम with makeup and everything. So he said, no, we need you at this time. I said, I'm extremely sorry. You know that, I'm doing 2 other shows and I'm not even exclusive, because it was very clear from the day one that Rita's character will be required 7 to 10 days in a month, not more than that. That time I was single, not married, taking care of my own self in Mumbai. I was very much new in Bombay. So, I needed little work. So then on mutual understanding, we decided that, we cannot continue with Taarak like this, and I'll just do other shows. But after 3 or 4 months, again, I got a call in April, I feel, April end, I got this call from the production house that whatever reasons are there, I don't want to say that, that we want you back in the show. And then I went back, and then I met this guy there in the show. That was GPL. So that was like 3-4 months ka phase when I was not there in Taarak. So that girl, I think Nidhi was her name, who was there for I think 5 or 7 episodes. That's it. Very few episodes. Very few episodes. Yeah. So that's it. After that, since GPL onwards, I'm the only Rita. Okay, Malav, I would want to ask you, there are actors who have come out and said that the environment on the set is pretty male chauvinist. So आपके रहते हुए ऐसा था? कहीं बार क्या होता है ना, एक्टर्स व्हेन दे थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. हमको क्या होता है ना, हमको सब सोचना पड़ता है. अभी आज समझो हम एक कॉम्बिनेशन सीन कर रहे हैं जिसमें सारे एक्टर्स हैं, लेडीज भी है, जेंट्स भी है. सो कई बार क्या होता है, हम लोग जेंट्स का क्लोज पहले करेंगे, बट उसका रीज़न ये होता है कि कल मॉर्निंग में पहला सीन जेंट्स का है और लेडीज़ का कॉल टाइम लेट होने वाला है. बट दैट वी नो, दैट दे विल नॉट नो. उनके लिए क्या होता है, अरे यार हम यहाँ बैठे हैं, देखो पहले जेंट्स का क्लोज कर रहे हैं, हम लेडीज़ को ऐसे ही बैठी हुई है. बट कई बार क्या होता है, आपको कुछ एक्टर को नेक्स्ट डे जल्दी बुलाना होता है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ता है. उसमें इट कैन बी 1 एक्टर ऑल्सो. समझो भीड़े है, मुझे भीड़े को सवेरे जल्दी बुलाना है, पर अभी भीड़े के जोन में देयर आर अदर 7 जेंट्स. तो फिर मैं वो जोन का लाइटिंग जो मेरा रेडी है, मैं उसका क्लोज करके ही मैं बाकी जगह पे जा सकता हूँ. आई डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ पे जेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि after Daya, especially after Daya, the stories are more gent-centric. It is more to do with a Jethalal or a Bhide or a Popatlal. तो क्योंकि स्टोरीज जेंट्स की ज़्यादा होती है ना, उनका काम भी ज़्यादा होता है. दे आर वर्किंग मोर नंबर ऑफ आवर्स. तो एज अ डायरेक्टर आई हैड टू सी के भाई दे रिमेन अ लिटिल मोर फ्रेश, वो थोड़ा ज़्यादा फ्रेश रहे. तो दैट इज़ द रीज़न जेंट्स को थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता था. जब तक दया थी, इट वाज तभी काफ़ी सारी लेडीज़ की स्टोरीज भी आती थी. दया के जाने के बाद थोड़ा लेडीज़ का ट्रैक कम हो गया है. मेल शॉविनिस्ट करके ऐसा तो यार कुछ है नहीं यार. जेंट्स कई बार इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि यू वर्क ऑन सीनियरिटी बेसिस. अगर आपके सीनियर एक्टर्स है तो आपको उनको पहले छोड़ना पड़ता है. आज अगर जेठालाल है तो मुझे दिलीप भाई का क्लोज पहले करना पड़ता है, बिकॉज दे सीनियर एक्टर एंड वो कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं. महीने के 26 दिन वो शूट करते हैं, सो ही नीड्स टू बी फ्रेश. लेडीज लोग महीने के 10 दिन 12 दिन शूट करते हैं. दे हैव द मी टाइम या जो भी मिलता है. सो कई बार ऐसा होता है जिनकी वजह से उनको ऐसा लगता होगा कि यार हमारा पहले नहीं हो रहा है. बट आई हैव ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट के मैं कटिंग जोन वाइज करी, क्योंकि मेरे लिए इट वॉज इम्पोर्टेंट कि मुझे जल्दी घर जाना है. So did that also affect the pay? I mean, gents are overworked. They have सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और एक्टर्स बता सकते हैं, क्योंकि हमें यूजुअली आप बहुत अच्छे भी फ्रेंड्स हो तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आर्टिस्ट अपना पर डे बहुत जल्दी से शेयर नहीं करते हैं. But I'm sure सबका per day different ही होगा. Like of course, I am sure Jethalal will not be paid as much as Abdul or even in Tapu Sena. Like it's also based on your performances. It's also based on number of the years output you are giving.
So I think, Everything. हाँ काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है. श्योर दिशा भी जब तक कर रही थी उसका भी पर डे बहुत अच्छा रहा. I mean, देखो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप कितने साल से काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में भी आप कितने साल से काम कर रहे हो, एंड ऑल्सो आप शो में आपका कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ है, एंड ऑल्सो बिटवीन योर रिलेशनशिप एंड द प्रोड्यूसर. आप कितना अच्छा अपना पॉइंट रख सकते हो उनके सामने, दैट व्हाई यू डिजर्व इट. जो एक्टर्स है जो 14 साल से कर रहे हैं, आई थिंक दे ऑल हैप्पी विद देयर पर डे, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. That's what they're doing. आई मीन अगर किसी को इश्यू होता पैसे का तो दे वुड हैव स्पोकन, सॉर्ट आउट हुआ रहता. Yeah, like a lot of them have See, spoken happy or also. not happy, people are who doing have not it. got after quitting, I guess. Yeah. You are not in touch with him anymore? Like, have you guys discussed the no. show after you've left? Not. No, as I said, we all feel that he's little hurt that Malav Okay. has left. But जितना मुझे पता है, I would definitely love to say this. Knowing Asit bhai and knowing Malav, they can never hate each other. They'll always have that unsaid love for each other all the time. So there are a lot of feedback about the show, like the fresh episodes, that people still binge on the older episodes. They don't watch the fresh episodes. What is your take on that? You know, this is I feel a very subjective thing, you know. I still feel 80% of the people are still liking Taarak Mehta. That is why the TRPs are there. 20% people are not liking it. Now when the ratio becomes 20 are liking and 80 are not liking, तब शायद आसिफ भाई will think what to do. I think he is a very smart businessman. उनको भी तारक मेहता से बहुत प्यार है. He knows his product in and out. जब हम लोग आई वुड से जो आज लोग हमारे पास कितनी बार आते हैं, जैसे कि मैं बचपन से तारक मेहता देखा हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, लेकिन पता है अब के एपिसोड्स उतने अच्छे नहीं हैं. बट टेल मी वन थिंग, इफ यू आर लाइक वाचिंग समथिंग सिंस योर चाइल्डहुड, व्हाट यू रिलेटेड विद, लाइक से फॉर एग्जांपल नर्सरी राइम्स हुए, या आपकी कुछ बुक्स हुई, आपकी कोई गेम्स हुए जो आप बचपन में एंजॉय करते थे, वो पॉसिबली अब आप एट दिस एज एंजॉय नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव ग्रोन इन लाइफ mentally, emotionally, physically. So you might not relate to that thing. So I feel the same thing is there with Taarak Mehta. Kids who used to relate with Tapu Sena, with the incidences happening in the society and all, they have grown up. They have grown up with Netflix and a lot of other things around. So now it's not that relatable for them. But adults coming to me and saying this, rarely that has happened. Usually adults, they are still enjoying it. For them, Taarak Mehta is like chai. चाहिए मतलब चाहिए. Then Daya had to, you know, quit the show midway because of a pregnancy. So काफ़ी सारी चीज़ें हुई है जिससे लोगों को maybe ऐसा लग रहा होगा, but I still feel majority people are still enjoying. I personally feel it is very beautiful that 14 साल में base at least same रहा है. वरना usually daily soaps में तो बहुएं नागिन बन जाती हैं और फिर पता नहीं क्या क्या होता रहता है. Like, you know, a lot of changes. मुझे एक बार श्याम भाई ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी हमारे पोपट लाल ने. मैं बोला यार आपको यार सही है, एक्टर्स को कोई स्ट्रेस ही नहीं यार. तो ही सेड अ वेरी गुड थिंग विच एक्चुअली स्टक विथ मी. लाइक यू नो, लाइक सी मालव, वी ऑन एन एवरेज शूट 15 days अ मंथ. लाइक यू नो, हम लोग का एवरेज अगर तू एनुअली या ईयरली पकड़ेगा, इट्स 15 days अ मंथ. तो अगर ये शो 15 साल चला है तो 7.5 साल तो हम घर ही बैठे हैं एज एक्टर्स, जब हम बाहर कुछ काम कर सकते थे. सो आई एम लाइक हाँ यार, दैट एक्चुअली मेक सेंस. आप 7.5 साल तो घर ही बैठे हो, भले आप एक शो कंटिन्यू कर रहे हो 15 साल, सुनने को बहुत अच्छा लगता है वो 15 years, पर अगर आप 15 दिन की भी एवरेज पकड़ो तो 7.5 years यू हैव नॉट शॉट फॉर एनीथिंग. सो यू नो दैट ऑल्सो, तो जो लोगों का कमिटमेंट है एक्टर्स का, यू नो, आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस आउट हुआ है. आई थिंक ये शो तभी बंद होगा जब आसित भाई को मजा आना बंद होगा. So I had read one of your interviews, Priya, where you said that they were shooting in Daman and Ardas had an accident where you had to rush back. So do you regret missing out on those moments where you could have been with your child? I'm glad I can say it on camera because कई बार जो चीज़ें हम बोलते हैं और जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनमें से कभी कभी कुछ कट ऑफ हो जाता है. But the thing was, I was not upset कि Malav was not there. He is working. वो ऑफिस में भी हो सकता था, दोपहर के 2 भी बजे हो सकते थे जब ये इंसिडेंस हुआ होता. So it wasn't कि मैं upset थी कि Malav 2 महीने से वहाँ पे और मेरे बच्चे का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया. No. The thing which was upsetting for me was Malav यहाँ पर आया, I think 26 late night he came, past 12, 1:30 के around वो पहुँचा. 27 को Ardas was in hospital, 28 morning we got discharged. So somewhere we heard indirectly coming from people that it was expected from him कि 28 को जब वो घर आ गया तो रात को निकल के आ जाना चाहिए था क्योंकि 29th को एक मीटिंग थी.
So I just felt कि यार The shoot was over. There was no yeah, shoot 28 happening. was the last day, 29 की meeting थी, and I just felt very sad about it कि 2 महीने तो वो वहीं पे था ना, और आपने suddenly कह दिया कि he's careless, वो आया नहीं, he should have come. जो आदमी 2 महीने अपना बच्चा छोड़ के वहाँ पे था, अपना घर छोड़ के था, पूरी टीम थी, वो नहीं देखा गया, और सिर्फ ये देखा गया कि वो यहाँ पे था, लास्ट डे पर ही was not there, कि लास्ट डे पे चला गया. Of course he was required here as well. I was all alone. कोविड था. एक बार को कोविड नहीं होता, मैं उसके पेरेंट्स को बुला लेती, अपने पेरेंट्स को बुला लेती. हॉस्पिटल में रहने के लिए कोविड टेस्ट करवाना कंपलसरी था. बहुत सारी चीज़ें थी. So you know, I just felt bad about it. कि and then later on also we heard, of course Asit bhai never said it on his face. I don't think so he told you on your face ever. Once he just mentioned it, you should have come back. Yeah, so those things are like, you know, कि वो कभी-कभी आपको पिंच हो जाती हैं कि इतना बेस्ट देने के बाद भी कभी-कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जाती हैं जो आपको लगता है यार कि रियली लाइक ये पॉइंट भी होना चाहिए था. तो या इट वाज मी हु फेल्ट बैड अबाउट इट. Thank you so much. Thank That you was so our much. interview. Hi, this is Malav Rajda. Hi, this is Priya Ahuja-Malav Rajda and you are watching us on Pinkvilla.